predecessors. And today you are bringing in a law that is more intrusive, that collects more data than the original law, and has fewer checks and balances, fewer safeguards than even the British-era law did. It is very ironic. The stated objective of the Criminal Procedure Bill of 2022, which was introduced, as set out in its statements of objects and reasons, is to update the law by taking into account new techniques of measurement and identification that have evolved over the last century. And the bill seeks to authorize police and prison officers to take measurements of those who have been arrested, detained, convicted of any person directed by a judicial or executive magistrate. The key words here are any person. The bill has redefined the term measurement to allow police to take retina scans, iris scans, fingerprints, palm prints, footprints, physical and biological samples, and even behavioral attributes, which are what? Which is your signature, which is handwriting. So anything that is referred to under Section 53 or 53 of the Code of Criminal Procedure 1973 falls within its ambit. The original act, remember, was only photographs and palm prints and fingerprints. This has increased the ambit. So what is it that is so dangerous about this bill? I'm going to try and explain it in layman's terms so everyone who's watching this can understand how this affects us. Because I remember opposing the UAPA bill, in those days a bill, standing here, and the Honorable Speaker told me that, why are you getting so excited about this? Ye to aatanwadiyon ka liye hai. And I remember answering, saying that, sir, if this bill comes in, tomorrow there is a risk of all of us becoming aatanwadis. And the UAPA has been misused, and today we have a fear that this bill itself may be misused, which is why we are standing up today. Sir, फिर disturb. मैंने क्या कहा था कि इतना क्यों विरोध कर रहे हो? सर वो रिकॉर्ड में है सर, मुझे खत्म करने आपने बोला कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? ये आपने कहा था कि आप इतना आप कभी भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के लिए आसन के बारे में मत बोला करो आप। अच्छा, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, सर है रिकॉर्ड में, आपने कहा था, ठीक है। So what is it that is so dangerous about this bill? This law रिकॉर्ड रखते हुए कैसे बात कर सकते हैं आसन के खिलाफ? The record isn't there, it is in the Lok Sabha, in the archives. No, you have to put the record. पहले सदन स्थगित करके रिकॉर्ड I can show you in the speech. Let me finish. I'll show the speech. मैंने आपको रिकॉर्ड का कॉपी रखना चाहिए। कभी भी सदन के If it's not in the record, expense. Is it so simple? पहले बोल जाओ फिर एक्सपेंस करो, ये कोई तरीका है? लाइव टेलीकास्ट होता है सर, ऐसे नहीं चलता है। देखा है सर, देखा है। अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या? अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या, ये बताओ आप। क्या अध्यक्ष जी ने विरोध किया क्या, ये बताइए। आपकी बात का अध्यक्ष जी ने तो विरोध नहीं किया ना। I'm sure the honorable speaker sir has already addressed me, Mr. Meghwal. Please, I would advise you, please let me finish. Thank you. The law speaker sir has spoken. There is no need for you. There is no need for you, Nishikanji. The speaker sir has spoken. Please sit down. The speaker has spoken to me. Sit down. The speaker has addressed me. I have accepted it. This law is being proposed in the absence of any overreaching data protection law, which India so desperately needs today. 5 years ago, we mentioned the data protection law. It is still not being brought in. You are saying that there has been advance of technology in the last decade, which is why we need to repeal it. But with the advance of technology, there is a flip side. The state has even greater powers of surveillance. So when we in this House authorize any legal expansion of the ambit of these powers, we need to ensure that these powers can be controlled, can be regulated. The old act was only photographs and fingerprints. Now you've added retina, you've added biological samples, behavioral. So we are signing off, basically all of us, on much greater powers of the state. So we need to put in very solid safeguards. This bill has no such safeguards. The malefides of this bill are apparent not only in the unconstitutional provisions it seeks to enforce, but it seeks to blur out all distinction, any and all distinction between an under trial, a detainee, a suspect, and a convict. And it is using the words, a person involved in any crime. It's a very broad sweep. The expansion of this ambit of the law's operation to people who have been arrested for any offense include people under preventive detention laws. So therefore, the privacy of individuals who are not convicted of any wrongdoing are being put at the mercy of the state. If I would like to quote Faiz Ahmed Faiz, who said, "Tire ilzam bhi, sange dushnam bhi." So you're putting not only ilzam, you're also giving us infamy. The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts sentenced to a present term of at least 1 year.
and anyone arrested on a charge that attracted a prison term of only 1 year, and thirdly, one who has furnished a bond for good behavior. This present bill includes all convicts and anyone arrested under any law or detained even under preventive detention. It is increasing the offences from minimum of 1 year to 7 years imprisonment under Section 3. But as Mr. Tiwari pointed out, the proviso to Section 3 has been very poorly drafted. If it is intended to mean that a person who has been arrested with a connection with an offence punishable with less than 7 years, it is a good thing. However, the use of the word may in that section itself is an escape route, because when you use it with the power of the magistrate to order the taking of measurements, it is nullifying this beneficial aspect of this proviso. So if Section 3 read with Section 5 and the introduction of preventive detention is making this far more draconian than the existing law, I would really request you to look into this. So I suggest that the word may in Section 3 be changed to shall, and it be clarified that under Section 5, the magistrate has no power to direct a person arrested for offences punishable with less than 7 years. Otherwise, Section 3 is completely nullified. Another dangerous thing about this bill, the average life expectancy of Indians is 69.6 years. You are permitting the retention of records for 75 years. And you're allowing the National Crime Records Bureau, the NCRB, to share and disseminate personal data with any law enforcement agency. This violates the best practices of data protection, which is the principle of purpose limitation, which means that you can collect data legitimately for one purpose, but it must be used for that purpose. It cannot be used for another purpose. There's a very vague term in this bill. It says investigation and prosecution of crime. So you can have agencies all over the country with no purpose limitation having access to your personal data. And the collection of data for personal data for some crimes may be very necessary. We understand that. But there is no distinction between those crimes and other crimes. It's a very wide sweep, which can be very dangerous. Now, this bill will make the dreaded Thanedar, even more dangerous. It gives virtual carte blanche to the police for sample collection. The old 1920 Act authorized police officers of the rank of sub-inspector and above. This new bill is letting police officers not below the rank of a head constable and prison officers not below the rank of a head warden to take measurements. So it's lowered the threshold. And if you refuse to take these measurements, that is an offence under Section 186, which is obstruction of duty of a public servant, as Mr. Maran pointed out, of the IPC. Now, this bill is allowing police and prison officials to collect measurements regardless of the refusal. This is a violation of fundamental rights, and this is going to shut out any dissent. This is the vagueness and overbreadth of several provisions is extremely concerning. Now, there's no appeal mechanism. If the magistrate says directing it, there's no appeal mechanism against the decision of the magistrate. The most dangerous and insidious aspect of this proposed law is the grouping of those booked for preventive detention. So Indian citizens, like all of us sitting here in the opposition, we can be arrested or detained even before the commission of any act of criminality. You may think we will do something, you may think we will say something, and we could be put under preventive detention. So before doing anything, you can take me and I will be grouped with those arrested for serious offenses and convicts. So if this bill becomes a law, I mean, we are entering a full-fledged police state. Any opposition will be brutalized into silence. Now, that is something we must safeguard against. The Home Ministry says, trust us. Yes, we would like to trust you, Mr. Home Minister, but even in UAPA, look at its misuse. You brought in this bill, look at its misuse. I was looking at Mr. Kishan Reddy, who was our Minister of State for Home, putting out the numbers. And if you look at the increase in the number of UAPA cases, from 16 to 19, 5,000 cases were registered and 7,000 people were arrested in the period 16 to 19, but only 2.2% of cases were resulting in a conviction. Preventive detention, 177 politicians arrested in Kashmir after revocation of Article 370, 71 from National Conference, 35 from PDP. When the CAA protests happened, 1,100 people were under arrest, 5,500 kept in preventive detention. There was a 28% increase in the number of sedition cases filed each year. Each year, 28% increase between 14 and 20. So if you look at the arrest of journalists, detentions of journalists in India, I was reading a report by the Free Speech Collective, and it said in the last 10 years, 154 journalists in India were detained, arrested. 67 of these were in 2020 alone. I'm going to now read a quote from the Supreme Court judgment, the state of Andhra Pradesh versus Chala Ramakrishna Reddy, year 2000.
The right to life is one of the basic human rights. It is guaranteed to every person by Article 21 of the Constitution, and not even the state has the authority to violate that right. A prisoner, be he a convict or under trial or a détenu, does not cease to being a human being. On being convicted of crime and deprived of their liberty with the procedure established by law, prisoners still retain the residue of constitutional rights. Our democracy, however flawed, seeks to give each Indian equal rights as human beings. Our laws are based on the principle of innocent till proven guilty. I will quote the poet Javed Akhtar, and he says it very nicely. He says, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है. मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद है. किसी का भी सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता. कदमों में सर अच्छा नहीं लगता. This bill places the privacy of individuals at the mercy of the state, allows for the retention of personal data with no framework for data protection whatsoever. I appeal to the government and to the Honorable Home Minister, please send this bill to a standing committee for further deliberations if you don't take it back. Thank you very much. श्री विनायक रावत जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 ये जो पेश किया है, इस बिल को हम समर्थन नहीं कर सकते. साथ साथ विरोध करते हुए हम माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके पहले वक्ता ने जो अपने विचार व्यक्त किए उसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं और इस बिल का भविष्यकाल में जो दुरुपयोग होने वाला है उसके तरफ अगर गंभीरता से अगर आप देखें तो इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर करें. उस स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरीके से बहस होने दो और उसके बाद आगे कुछ करना हो उसका निर्णय फिर एक बार लेने के लिए आप इस सदन में आ सकते हैं. सभापति महोदय, बिल पेश करते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कानून को मजबूत करने हेतु और दोष सिद्ध होने के लिए मदद हो, ऐसे हेतु से यह विधेयक लाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून को मदद करने के लिए तो छोड़े, दोष सिद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन पूरी तरीके से मानवता के ऊपर आघात करने वाला और मानवता और इंसानियत नष्ट करने वाला ये बिल है और राइट टू प्राइवेसी का हनन करने वाला ये बिल हो सकता है. इसलिए ऐसी तरह से बिल संसद में लाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से बहस जब तक नहीं होती है, स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर बहस नहीं होते, तब तक मानवता के ऊपर आघात करने वाला ये बिल इस सदन में पास होना यानी इंसानियत का क्रूर ठट्टा हो सकती है, इंसानियत नष्ट होने वाली ये बिल है. इसलिए इस बिल को हम शिवसेना की तरफ से विरोध कर रहे हैं. सभापति महोदय, एक मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से अपने देश में सारे इंसान को प्राप्त हुआ है, लेकिन आजकल एक मौलिक अधिकार जो है वो रहे नहीं है. मौलिक अधिकार के ऊपर हर एक तरीके से आक्रमण करना, अतिक्रमण करना, कई एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान करना, ये जिस तरीके से आज हो रहा है और इसीलिए अधिकार में या कानून में जब बदलाव करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से, तो उसके दुष्परिणाम जो होने वाले उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है. सभापति महोदय, दुर्भाग्य से इस बिल में उसके दुष्परिणाम की चिंता हुई नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं गए. आज पूरे देश में जितने भी आरोपी यानी पकड़कर जेल में रखे उसमें से 71% अपराधी अनट्रायल अपराधी है. उनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप साबित न हो चुका है, लेकिन बरसों से वहां पड़े रहे. 2 दिन पिछले हफ्ते में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने भी चिंता जताई है कि लाखों की करोड़ों की संख्या से जो अपराधी पिछले 10-15 बरस से अंडर ट्रायल है उनका भविष्य क्या है, ये चिंता सर्वोच्च न्यायालय ने तो व्यक्त की है. इसीलिए
मैं कहना चाहता हूं कि जो जिनके ऊपर कुछ ना कुछ शक से या कोई अपराध थोड़ा सा हो, लेकिन उसके ऊपर उनको पकड़ने के बाद उनको सही वक्त में उनके ऊपर कोर्ट में मामला न चलने की वजह से उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो रही है यानी जेल में, तो ऐसे अपराधियों को कुछ राहत देने के लिए सोचना चाहिए था। ऐसे अपराधियों को कुछ उनकी जिंदगी कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे मराठी में एक कहावत है, आगीतून उठून फुफाट्यात टाकलं, वैसे हो रहा है कि उनको ऐसे आरोपियों को कुछ मदद करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ चिंता व्यक्त की उसका ध्यान देने के बजाय और कानून कैसा ज्यादा से ज्यादा परेशानी कानून के माध्यम से हो सकते हैं इसके तरफ इस बिल के माध्यम से ज्यादा ध्यान दिया गया है। सभापति महोदय, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के माध्यम से अभी पुलिस अथॉरिटी है या प्रिजनरी अथॉरिटीज है, उनके माध्यम से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, उसमें से इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरस स्कैन, आप ये भी ले सकते हैं। और ये लेने का अधिकार किसको दिया है सभापति महोदय? एक पुलिस स्टेशन का सादा कांस्टेबल अपने दिमाग से पकड़े हुए सारे आरोपियों को ये कानून के माध्यम से परेशान कर सकता है। और इसलिए जो अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जैसे आइरस हो, रेटिना हो, ऐसे या बायोलॉजिकल आप सारे टेस्ट या सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी फाइनल करनी चाहिए थी। वो न करने की वजह से एक सादा पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल उनके दिमाग से जो आए वो ऐसा कर सकेंगे और सबको दम देना चालू करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज नार्को टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं तो भी उस आरोपियों का सम्मति मिलना आवश्यक है, उसके बजाय नार्को टेस्ट नहीं होते। लेकिन इस बिल के माध्यम से चाहे सम्मति हो या न हो, इजाजत हो या न हो, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल वो बोलेंगे चलो हम आपको ये सबकी जांच करने के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। और कितनी तरीके के जांच हो और कितना सैंपल इकट्ठा करने जा रहे हैं। आज सभापति महोदय इस कानून के अंदर यानी सबसे आज हम सारे पॉलिटिशियंस हो, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अलग अलग तरीके के आंदोलन में उनका हिस्सा तो रहते ही है। अभी महंगाई बढ़ चुकी है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े और कई महंगाई इतनी आसमान से छूने के लिए जा रहे, उसके खिलाफ कई सोशल वर्कर आंदोलन में आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं, राज्य के कार्यकर्ता आंदोलन में आते हैं। और ऐसे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर चाहे वो दंगा फसाद करे या न करे, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, उनके ऊपर 144 के अंदर उनको केस दर्ज करते हैं, 107 उनके ऊपर नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद उनको जमानत देनी पड़ती है। सबसे बुरा असर इस बिल के माध्यम से होने वाला है सभापति महोदय, जिनके ऊपर 107, 108, 109 और 110 ऐसे सामान्य धारा के माध्यम से भी प्रिकॉशनरी एक कुछ सावधानता लेने के लिए जो पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक्शन लेने की जो अभी की जो प्रोविजन है, ऐसे लोगों के ऊपर भी इस कानून के माध्यम से उनका रेटिना लेने की व्यवस्था है, आइरस ले लिया जाएगा और भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो भी जितने पर्सनल डिटेल्स डाटा कलेक्शन करना है वो सारे के सारे करने के लिए उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल हमेशा तैयार रहेगा। सभापति महोदय, आज 107 हो या 110 हो, जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा, कोई एक चाल में सामयिक नल के ऊपर झगड़ा हुआ तो भी पुलिस वाले उनको 110 की नोटिस देते, 107 की नोटिस देते। क्या ऐसे जिनके ऊपर 110 की नोटिस देकर शांतता भंग न होनी चाहिए, ऐसी वार्निंग जिस नोटिस के माध्यम से मिलते उनके ऊपर भी उनका भी ये सब डाटा कलेक्शन करने का काम उस पुलिस स्टेशन वाले करें तो भविष्य में इस भारत माता के सुपुत्रों की जो निजी आजादी है, ये निजी आजादी का रक्षण कौन करेगा सभापति महोदय?
अगर इस सभागृह में ऐसे बिल पास हुआ, मंजूर हुआ, तो निजी आजादी रहेगी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये अमानुषता है, एक क्रूरता है ऐसे बिल पास करके। इसके लिए हम तो इसका विरोध करते ही है। और साथ साथ में और बताना चाहता हूं सदस्य महोदय, जो संविधान के माध्यम से हम सारे देशवासियों को जो मौलिक अधिकार मिला है, ये संविधान के माध्यम से मिला है, किसी की मेहरबानी से मिला नहीं है। इस संविधान को ही तोड़ने फोड़ने का काम इस बिल के माध्यम से करने की सरकार विचार कर रही है क्या? क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये संविधान ये किसी ने पेन लिया और किताब लिया और लिखा, ऐसा नहीं हुआ है। 350 लोगों का ये संविधान का बेंच, उनके माध्यम से कई वर्ष अध्ययन करके संविधान लिखा गया है। और इस संविधान से हम जीते हैं, भारत माता में स्वतंत्रता जो मिल रही है। ऐसे संविधान का रक्षण करना ये कर्तव्य शासनकर्ताओं का है, लेकिन ऐसे संविधान को दुर्भाग्य से इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए मैं इस विधेयक को विरोध करके फिर एक बार कहना चाहता हूं, जैसे कि मारन साहब ने बताया, विनंती की कि हम आपके पास विनंती करें कि इतने महत्वपूर्ण बिल है जिसका सीधा असर एक भारत के सारे देशवासियों के ऊपर होने वाला है, 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर असर होने वाले। ऐसे बिल की जबरदस्ती मत करें, सोचिए, अध्ययन करें और इसके ऊपर बहस होने दो, और फिर एक बार कुछ नया बहस के माध्यम से अच्छा और कानून मजबूत करने के लिए और दोष सिद्ध करने के लिए जो जो आवश्यकता है वो जरूर करें, लेकिन सही सोचकर करें, कोई जबरदस्ती मत करें। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Thank you for letting me talk on this criminal procedure bill 2022. So this bill basically seeks to repeal the Identification of Prisoners Act 1920, which is a very age-old act where only the fingerprints and palm prints and other basic things were collected from suspects or other people. And basically, it is a very basic law which we have in the Identification of Prisoners Act 1920. And this bill, sir, Criminal Procedure Bill 2022, for us to be in line with the global standards, for our investigation agencies to be on par with other countries, other advanced countries. So this bill has been brought in, sir, and it basically provides the necessary statutory backing for the agencies to go ahead with this investigation. And basically, one thing we can understand from this is, sir, it can also protect the innocent people. It can save the money of the government, it can save resources, and it will save time in the investigation, because we have seen cases not solved for more than years and years, sir. We have seen cases abroad where, because of this various advanced techniques, they are able to catch offenders even after 10 years, 15 years. They are able to easily nab the culprits. So I think we have to be in line with the global standards. We should adopt modern strategies. And in clause 2B of the bill mentions biological samples and their analysis in the definition for measurements. And this clearly, it can be inferred that DNA falls under this definition of measurement. Almost around 70 countries around the world have central DNA database, and it is not something new, sir, or something which is only for India. I think we should go ahead with this central DNA database. We should collect samples, because with this, there's, the repeat or the serial offenders will deter them from committing more heinous crimes, and it will also solve the cases faster. And also, sir, in 2018, the Home Ministry launched the National Database of Sexual Offenders, NDSO, which includes names and other details, and this has greatly helped in curbing these offenders. So similarly, sir, this bill also provides for database for other criminal offenders, which is a welcome move also. If such a database is there, it can strengthen the law enforcement agencies. Sir, and I would like to suggest a couple of
points. You've seen the other speakers, everybody is having serious concerns about two things, sir. So this bill should not be used as a means for political witch hunt. The government should give proper comfort. It should convince, the Honorable Home Minister should convince the whole House that this bill will not be used for political witch hunt. And also, the DNA profiling also, which is a sensitive thing, should be purely used for serious crimes and other counter-terrorism purposes only. And there's another important question, sir. How safe is the Quitted. I'm of them. You're going to again law point which most people have made is about the to speak. The police to collect fingerprints, photographs, iris scans, and a range of biological identity samples from individuals. If it authorizes the National Crime Record Bureau to create a central repository of this evidence and share it with law enforcement agencies. On the face of it, this 2022 bill appears to be broader, more modern version of its colonial predecessor. But is such a law too intrusive? That is the question which is being debated here in this House. And I quote, without compromising. Control them, but at the same time, are we doing something which will protect innocent citizens? There